Hello everyone. This video is of chapter number 4 of macroeconomics book, determination of income and employment. This is the fourth part of this chapter for class 12th. In this video we are going to learn about investment multiplier or money multiplier, and it is by Ms. Divya Saraswat. Let us see what are the topics we are going to cover through this video. So the topics are the concept of multiplier, working of multiplier, relationship between multiplier and MPC, and a relationship between multiplier and MPS. So let us start. So the concept of multiplier basically the ratio of change in income to change in investment. अगर आपकी इनकम में चेंज आ रहा है तो उसमें आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से चेंज आता है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लायर, और इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. सो इट बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्टिंग इंक्रीमेंट इन इनकम. सो बेसिकली अगर मैं मल्टीप्लायर के फॉर्मूले की बात करूं, इट इज डिनोटेड बाय के. सो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई. इंक्रीमेंट shows basically the change जो आपका initial था and the current one. So change in y upon change in I is the formula of multiplier. So here change in y is change in income and change in I is change in investment. Now how the working of multiplier we are going to do here, as you can see here we are having here round, change in I, change in y, change in C and change in S. Change in C is obviously in our last video we discussed about that MPC is marginal propensity to consume. It is a slope of consumption curve. So ये कहीं ना कहीं हमारा change in C को derive करता है. MPC क्या होता है basically? Change in C upon change in Y. So here suppose अगर किसी भी person ने investment शुरू करी and it start from 100 rupees. Okay. सो उसने उस 100 रुपीज का क्या किया, उसने कहीं जाके उसको इन्वेस्टमेंट किया एज अ सपोज गोल्ड खरीदा. तो जिस पर्सन से उसने गोल्ड खरीदा होगा तो वो 100 रुपीज उस पर्सन की इनकम बन जाएगा, राइट. फॉर दैट पर्सन, फॉर द पर्सन ए इट विल बी द इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट. वो अपनी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट कर रहा है. एंड फॉर द पर्सन बी जिनसे उन्होंने गोल्ड खरीदा है, परचेज किया है, उसके लिए वो उसकी इनकम में इंक्रीमेंट हो जाएगा. So change in Y is 100. Now consumption over 100 rupees अगर हम 0.8 consumption मानते हैं, so what will be the consumption here? 80 rupees. Okay, and what will be the saving? Rest are the saving 20 rupees. Now what will happen now? Consumption अगर उन्होंने कहीं किया है, suppose यहाँ जो 80 रुपीज है वो कंजम्पशन है पर्सन बी के लिए, लेकिन उन्होंने उसको जहां कंज्यूम किया है वो किसी ना किसी की इनकम बनी होगी. अब दोबारा से वो किसी और को रिसीव हुआ है तो वो उनकी इनकम बनी है. नाउ उस 80 रुपीज को अगर हम देखें अगेन, उसका जिसके पास भी वो एज अ इनकम रिसीव हुई है, उन्होंने उसका कंजम्पशन किया होगा और कुछ पार्ट सेव किया होगा. इफ द एमपीसी इज 0.8 देन 80 का 0.8 इज 64 एंड रेस्ट 16 रुपीज विल बी सेविंग. नाउ अगेन दिस कंजम्पशन जो इन्होंने कंजम्पशन किया है वो किसी के पास तो रिसीव हुआ है, तो वो उस पर्सन की क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट इन और इंक्रीज इन इनकम. सो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इनकम? 64, सेम एज इट इज. नाउ अगेन 64 का 0.8 इज 51.2 एंड रेस्ट इज सेविंग. लाइक दिस ये प्रोसीजर बढ़ता जाएगा. नाउ यस, this procedure will increase till the change in investment will equal to the change in S. ठीक है. and this will be, suppose this will be अगर 100 है, this is your 0.2% or 0.2. so what will be your 0.8? 400 and rest is your 500. इसमें ज्यादा आपको नहीं सोचना है, बस इतना समझ लो that there is a formula for that change in Y upon change in I is your K. So 500 upon 100, 5 times you will increase the investment multiplier. Okay. So जितना ज्यादा आपका MPC होगा उतनी ही ज्यादा आपकी increase in income होगी. So higher the MPC will be the greater increase in the income. Now come to next, if you have to write down this procedure, so let MPC 0.8 or
80% and there is increase in investment by 100 crore. Fine. In round 1, it lead to increase in income by 100 and MPC is 0.8. So consumer will spend how much? 80 crore, which will become the income for producer 2 in round 2. So 80 crore will become the income for producer for round 2. Now, in round 2, increase in income of 80 crore and change in consumption will be 64 crore. कितना होगा वो? 0.8. And in round 3, it would be converted into change in Y. अब ये जो consumption है वो round 3 में क्या हो जाएगा? Change in Y हो जाएगा. वो किसी और की income बन जाएगा. Now, this process will continue till change in I is equal to change in S. Investment की increment, saving की increment जितनी equal to नहीं हो जाती है, तब तक ये procedure चलेगा and it result in increase in income. Fine. Now let us see what is the relationship between multiplier and MPC. There is another derivation of K is 1 upon 1 minus MPC. Fine. MPC is marginal propensity to consume. Suppose MPC जो हमने let किया था, it was 0.8 in our last slide. So 1 minus 0.8 is 0.2. So 1 upon 0.2. It will be 10 by 2, 5 times. Like this, if we are going to put some values in MPC, start from 0. If I am putting MPC as 0 here, so 1 upon 1 minus 0 will be 1. So 1 by 1 is 1. K की value क्या आएगी यहाँ पर? 1. If MPC is suppose 0.2. Now 1 minus 0.2 is 0.8. So 10 upon 8 is your 1.25. Now next one is, suppose I am putting the value of 1 or no 0.5. Now what will be the value of MPC here? 2. And if I am having the another one here, 1, then what will be the value of MPC here? Try to calculate. 1 upon 1 minus what? Yes, the answer will be infinity. Okay. So 1 upon 0, the answer will be infinity. Now moving next, the relationship between multiplier and MPS this time. And I am already written here values. Now MPCQ. Because 1 minus MPC is your MPS. Okay. 1 minus MPC is your MPS. ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा है बहुत अच्छे से. Now, अगर मैंने MPS 0 डाला, then 1 upon 0 is what? Infinity. 1 upon 0 is your infinity. So I am writing here infinity. Fine. Now, 1 upon 0.2. What will be the value here? 1 upon 0.2. 5. Next, 1 upon 0.5. So what will be the value here? 2. 1 upon 1 is 1. अब बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर लास्ट स्लाइड में और यहाँ पर. फाइन. सो पहले इधर देखते हैं, पहले वाले में. As the MPC is increasing, the value of K is also increasing. K की वैल्यू शुरू कहाँ से हुई है? 1 से until infinity. Fine. Because MPC and MPS के बारे में हम लोगों ने ये जाना था that it will lie between 0 to 1. तो MPC की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ही पुट की जाएगी. तो K की वैल्यू कहाँ तक आएगी? Till 1 to infinity. Okay, it will not be negative till 1 to infinity. Similarly, अगर मैं इसमें बात करूं, here MPS is increasing and the value of K is decreasing. It started from infinity and it lasts to 1. So, if we are talking about the relationship between multiplier and MPC, then what kind of relationship they are having? They are having direct relationship. It means increase in MPC will lead to increase in multiplier. There will be a direct relationship there in this. Now, what kind of relationship between multiplier and MPS? Increase in MPS lead to decrease in multiplier. So there is inverse relationship between
मल्टीप्लायर एंड MPS. अब एक इंपॉर्टेंट चीज और इससे हम लिखते हैं that k is equal to 1 or greater than 1 and k is equal to infinity or less than infinity. यानी कि k की जो भी वैल्यू होगी या तो वो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी या फिर इन्फिनिटी होगी और उससे कम होगी. मोर देन इन्फिनिटी तो कुछ नहीं हो सकता. तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k. मिनिमम कितनी होगी 1 and maximum is infinity. So k lies between 1 and infinity. It can be equal to 1 or it can be equal to infinity. So thank you so much for watching this video. This is it in multiplier.